नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आज भी आपके साथ जुड़ चुका हूँ। मैं हमेशा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता हूँ और इसी कोशिश में सिलसिलेवार में नए नए टॉपिक लेता हूँ। आपको अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के बारे में एक चीज़ में हमेशा कहते आया हूँ, या मुझे लगता है कि एक हिंदी में कहावत है, देयर इज़ अ प्रॉवर्ब इन हिंदी, और वो प्रॉवर्ब शायद मेरा कहना कोई गलत ना समझे, लेकिन वो प्रॉवर्ब जो है वो इस तरह से जाती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसका मतलब क्या है? द घोस्ट्स which do not listen are required to be kicked. शायद यही एक पहलू है जो रिजर्व बैंक पिछले 2 साल से बड़े कड़ाई से इम्प्लीमेंट कर रहा है, बड़े कड़ाई से। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 साल में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को बहुत सारी पनिशमेंट या पेनल्टीज़ हुई है, और ये जो पनिशमेंट पेनल्टीज़ है किस वजह से है? जो वजह मैं हर वीडियो में अंकित करता हूँ, द रीज़न फॉर विच आई ट्राई टू एडवाइज द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इज दैट यू बी ए कंप्लायंट बैंक. You take out all my 50-60 videos, whatever the number of videos which are there on the site. I have always driven focus to compliance, that you should be a compliant bank. And then despite this, there are a couple of banks which we find that they are not complying with the regulation of Reserve Bank of India. And precisely for this reason, recently on 19th of September, a couple of days ago, Reserve Bank of India came out with a circular on role of Chief Compliance Officer or a Compliance Officer. Mind you, the role of Chief Compliance Officer or a Compliance Officer in a bank was advised by Reserve Bank of India way back in 2002-2003. If you take out the master circular on the audit for the urban cooperative banks, they had made a mention that you should have one officer who will look after the compliances. So typically, what was the need to introduce this circular? There are 2-3 reasons which come to my mind as to why this circular was essential. Reserve Bank of India has been insisting that you should comply with the guidelines which are issued by Reserve Bank of India, limited to Reserve Bank of India guidelines. But the circular now issued on 19th of September, it doesn't cover only the RBI instructions. It goes beyond that. And when it goes beyond that, we have to think carefully as to how we are going to comply with this particular circular. For the bigger banks like the banks in Tier 3 and Tier 4, they may not need any advice or information because they have the skill set to handle whatever the regulation that is coming up. But unfortunately, the smaller banks do require some kind of support, some kind of help as to how to interpret these guidelines. Mind you, we cooperative banks have a typical way of working as a banker. And what is the typical way? The typical way is that we don't record what we discuss and what we decide. So when the Reserve Bank of India comes for inspection, you will find that you have discussed a lot of things in your board or in your subcommittees, but that is not recorded. You need to ensure that you record the discussion, even record the dissenting opinion of any of the members of the committee or the board. It is considered that we decide everything unanimously, so we do not have difference of opinion. That theory is gone. The Reserve Bank of India is not going to believe that all 15 or 17 or 21 people, whatever be the number of members in your board, think alike. That is not the story. That is far away from the truth. So many times, many members of the board do disagree, but then their disagreement is not recorded or not registered. Coming back to this particular circular, which is highly interesting one.
For tier 1, tier 2 banks, or for the salary earners banks, or the banks which are under all inclusive direction, this circular is not applicable. But circular is applicable for tier 3 banks and tier 4 banks. For tier 4 banks are the ones which are bigger ones, beyond 10,000 crores, the deposit base. You are in tier 4. Now, if you are in tier 4, you have been given 6 months time to start the compliance function, the compliance department, or the compliance analysis that your bank does. For tier 3 bank, the period that is given is of 1 year, that is October 23. For tier 1, tier 2, did not worry about this circular, but all my videos are basically for tier 1 and tier 2 banks, a little bit for tier 3. Now, when I look at this particular circular, I find that despite insistence, if you look at the history of penalties which the Reserve Bank of India has levied on the cooperative banks, the basic cause is incorrect interpretation of regulatory guidelines. And despite understanding the guidelines, the bank continues to commit the same error again and again, despite warnings from Reserve Bank of India. For the first time, couple of new things have come up in this circular. I would like to focus on those couple of new things as well. But then why this has come? This has come because we are not improving to the expectations of Reserve Bank of India, and Reserve Bank of India has now widened the scope of compliance. They are not only talking about the regulatory guidelines, they are also talking about the various laws which you are required to follow, various regulations from other than Reserve Bank of India which are coming to you. For example, if you are governed under the state law of the state where your bank is registered, or if you are under Multi-State Act, they want that you should comply with the provisions of these two laws as well. There will be some kind of contradiction as far as the interpretation of compliance to the state laws are concerned. And what that contradiction is, there is a provision under Multi-State Act, and that has been overwritten by the recent amendment in BR Act. So will that be a non-compliance? No, it will not be, because BR Act is supreme and you are registered under Reserve Bank of India, and BR Act is implemented, executed, monitored, controlled by Reserve Bank of India. So it's necessary that you follow BR Act very meticulously. There are several acts which as a banker you are required to follow. So compliance, they are trying to focus on compliance with various legal provisions, whether it is central government, state government, or whatever, as long as it is not tangent with the BR Act. So the provisions which are tangent with BR Act or Reserve Bank of India Act, you may ignore, but this ignorance has to be recorded. Now, when I say that this ignorance has to be recorded, for the simple reason, we do have a compliance officer, but we don't call him so. Almost all banks, एक या दो बंदे तो ऐसे रहते हैं, in all banks, कि जो रिजर्व बैंक के सर्कुलर अच्छी तरह से पढ़ते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से क्या करना चाहिए वो समझते भी हैं. And that's how the banks are not punished, where these people, such kind of people, are really ensuring that the bank doesn't come under any kind of default of the regulatory guidelines. They are worried about the regulatory guidelines. As far as state law and the multi-state law and all other acts are concerned, the machinery is sluggish with these law enforcing agencies. So even if you are committing a default, it will be detected very late, and I do not know whether you will be punished for that. Because there are penalty provisions in each state law or each cooperative state act law. But very rarely the registrar or these people try to punish the urban cooperative bankers. For the reasons better known to you. I need not talk about the reasons. But then with Reserve Bank of India, you can't take panga. The second reason which I believe that this circular has come is that despite insistence on several occasions, the banks have been ignoring or misinterpreting the regulatory guidelines. Now, here is a mechanism whereby Reserve Bank of India will ensure that all its instructions and advices are meticulously followed.
And there is one person in each bank who is responsible to the regulator. In what sense? He will interact with the regulator as far as compliance areas are concerned. This circular is very simple, very plain. I would like to pick up a couple of points which will enable you to understand the sense of this circular. What they are saying is that the compliance processes which have commenced in India almost 35 years ago when the Ghosh committee was formed, and that was way back in 1992. Based on that, the Reserve Bank of India has issued several guidelines on compliance function to the commercial banks and public sector banks. Remember, even these banks have not been taking Reserve Bank of India seriously. There are a series of circulars for the commercial banks that you must have a compliance officer, he must comply this, he must comply that, and therefore when they don't comply, you will find the big daddies in public sector bank also penalized by Reserve Bank of India. Now they want you to follow this because they want to address the regulatory risk and the reputational risk. If they take you to penalty, you face a reputational risk. And to ensure that you don't face a reputational risk, this concept of compliance culture or this concept of chief compliance officer has come into play. The guidelines are very simple and you need to ensure that you follow these guidelines. They want you to set up a chief compliance officer and the organizational structure they want you to set up. Preceding that, you need to formulate the compliance policy for the bank, how you will be doing it. Now, when I look at it, they are taking a view that these guidelines would be issued or are being issued with taking into consideration the sense of proportionality. I mean, this is what I was talking, that the regulation should be graded one. Now, this is perhaps the first circular for the urban cooperative banks which has been introduced with gradation. When I say this, it would mean that banks in grade 1 and grade 2 have been exempted. Banks, salary earners banks have been exempted. Grade 3 have been granted a 1 year's period, and grade 4 has been granted 6 months period to set up the department and the processes. And what are the key features which should attract you is this, that even if you are under grade 2, मान के चलो कि कल जाके आप ग्रेड 3 में आ गए. ग्रेड 3 में कैसे आते हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं. आपके डिपॉजिट्स अगर 1000 करोड़ के ऊपर हो जाते हैं तो आप ग्रेड 3 में आ गए, लेकिन इसको ट्रांजिशन पीरियड प्रोवाइड किया गया है. व्हाट दे आर सेइंग इज दैट इफ यू मोमेंट यू क्रॉस दैट बेंचमार्क, you will be given 6 months transition period to set up a compliance department. A date on which you cross that benchmark period, that transition period has been given. It would mean that if your bank is, whatever be the size, if you are under all inclusive direction, this will not be applicable. But the moment you come out of all inclusive direction, that they call it as AID, within 6 months you will have to have a setup for the compliance function within your bank. As I said, from 2002 onwards, they have been saying about this compliance function and who is the compliance. Many banks have been insisted by Reserve Bank of India, even before the circular, this particular circular is issued, that you should have a compliance policy, you should have a compliance officer. On what basis they were talking? They were talking on the basis of the audit circular issued in 2002-2003, that you should have a senior professional who should be looking after the compliance function. Ideally, अगर हम इसको अलग तरह से देखते हैं तो Reserve Bank of India is ensuring when they come for inspection, this one compliance officer will ensure that all the regulatory guidelines have been complied properly. There was no mechanism hitherto. There was no mechanism for the Reserve Bank of India to know whether all the guidelines have been complied or not. Now that mechanism will be available for, I'm not talking for tier 1 or tier 2 banks. I'm talking about the tier 3 and tier 4 banks. But then tier 1 and tier 2 banks can take a clue from this and try to imbibe these guidelines. Because as soon as they then venture into tier 3 segment, as per the current classification, they will seamlessly adopt these guidelines. They are currently not required to, but they should imagine that they should be doing this. Because if you do this, even if you are a small bank, say of 100 crores or 200 crores,
And if you adopt this particular policy, let me tell you, even Reserve Bank of India is not asking you to follow this, but I am asking you to follow this for the simple reason, you will be insulating yourself from the regulatory risk, penalty risk, and the reputational risk, because the guidelines are comprehensive, and these comprehensive guidelines enable you to build a proper structure whereunder what I have been talking for the past 1 year about be a compliant bank will be achieved here. And they have talked about introduction, compliance risk, scope and coverage of compliance functions, so on and so forth. Remember, if you read the circulars, you don't need an explanation. But then there are a couple of beautiful things which have come into this circular. One of the beautiful things is that treating the customers fairly. And if your staff is not treating the customers fairly, they are not compliant. That is what the idea, the suitability of customer service they are talking about. And they are not only talking about the BR Act or Reserve Bank of India Act or the inspection or the regulatory guidelines. They are talking of all laws, all rules, all regulations. The moment you are coming into the trap of any kind of violation, for example, एक ज़माना था कि वही समझो आपके बैंक के ऊपर कह रहा हूँ मैं, ईडी या इनकम टैक्स या किसी ने रेड कर दी किसी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, दे आर रेडिंग यू. Your job is to inform Reserve Bank of India that this is the thing that has happened. These are the guidelines which are contained in this particular circular. They are creating alerts. Reserve Bank of India is creating alerts for controlling the sector. That's how they are going to control the 1400 odd banks. And typically मुझे ये लगता है कि लगभग 600-700 बैंक जो होंगी कि जो टायर 3 में होंगी, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको सुपरवाइजरी एंगल भी दिया गया है. जब इंस्पेक्शन का अभी जो मेथड है जो बदल गया है, जिसके बारे में मैंने 2-3 वीडियो किए थे, उसके दौरान ये देखने वाले हैं कि आपका कंप्लायंस डिपार्टमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, क्या आपकी पॉलिसी है, पॉलिसीज़ में फ्लॉस क्या है, वो सब देखने वाले हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी होने वाली है कि बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट, बस सीनियर मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपको अपने बैंक में करनी चाहिए. आपको अपने बैंक में सीनियर मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स क्या होंगे ये डिफाइन करने चाहिए, क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट विल ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, जो भी आप अपॉइंट करोगे. और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट दोनों साथ में इसको देखने वाले हैं. कंप्लायंस फंक्शन क्या होगा? कंप्लायंस फंक्शन इस तरह से होगा कि वो कंप्लायंस पॉलिसी प्रिपेयर करेगा, सीनियर मैनेजमेंट विल ओवरसी द कंप्लायंस फंक्शन, एंड देन देयर विल बी अ प्रोसेस थ्रू विच द कंट्रोल्स वुड बी बिल्ड. फॉर एग्जांपल, आप अगर कोई डिपॉजिट की स्कीम लाते हो, तो स्कीम लाने के बाद में 6 महीने तक ये कंप्लायंस वाला बंदा उसको देखेगा कि ये भाई ठीक तरह से नियम में चल रहा है, रिजर्व बैंक के कानून के खिलाफ कोई आपकी अवहेलना तो हो नहीं रही है. ऑल दीज थिंग्स वुड बी सीन बाय दिस रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी कंप्लायंसेस. इसमें उन्होंने और एक चीज़ करी है. वो एक चीज़ ऐसी करी है कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता है. वो ऐसा कहते हैं कि एनी communication of discomfort either from regulator or from any authority should be informed to the Reserve Bank of India if it is other than Reserve Bank of India. What is the discomfort situation? आपको इनकम टैक्स ने नोटिस भेज दिया कि आपने टैक्स वायलेशन किया है. That's a discomfort. Probably these will be required to be reported. These would be required to be reported. उनका ये और एक कहना है कि ये लेटर और स्पिरिट में आपको फॉलो करना चाहिए. आपके पास एक इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम होना चाहिए. और वो ये कहते हैं कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट में जो रिस्क मिटिगेशन प्लान आता है कि देयर आर सर्टेन एरियाज विच नाउ द इंस्पेक्शन रिपोर्ट सेज दैट यू शुड फिनिश दिस विद इन दिस ड्यू डेडलाइंस. आरएमपी को एक्सटेंशन नहीं मिलता है, रिस्क मिटिगेशन प्लान को एक्सटेंशन नहीं मिलता है. आपको तो वो कंप्लाई करना ही है जो भी डेट दिए गए हैं. और उसमें और एक चीज़ उन्होंने ऐड की है, वो है मैपिंग, मॉनिटरेबल एक्शन प्लान. कोई भी आरएमपी अगर होगा तो उसको एमईपी भी लगेगा, वो मॉनिटरेबल एक्शन होगी. और उसके बारे में अगर आपका अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रहता है तो आपके ऊपर पीनल एक्शन भी लिया जा सकता है. आप जब कंप्लायंस ऑफिसर या कंप्लायंस डिपार्टमेंट सेटअप करोगे तो दैट विल बी दी रेफरेंस पॉइंट फॉर द एंटायर बैंक विच इज़ बीइंग फंक्शनल.
एंड ये जो तुम्हारा CCO होगा, बंदा जो होगा, वो सीनियर मैनेजमेंट बोर्ड या ऑडिट कमेटी आप जैसे डिसाइड करोगे पॉलिसी में, उसको रिपोर्ट करेगा। लेकिन उन्होंने आइडेंटिफाई करने के बाद भी आपने अगर सुना नहीं, एज अ बैंक आपने उनकी इंस्ट्रक्शन सुनी नहीं और जो रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ है, तो ये CCO वाला बंदा है ना, सीधा रिजर्व बैंक को रिपोर्ट कर सकता है। क्योंकि CCO को जब आप अपॉइंट करोगे तो आपको रिजर्व बैंक को प्री इंटीमेट करना है, अप्रूवल नहीं लेना है, लेकिन आपको रिजर्व बैंक को बताना है कि भाई ये बंदा हमारा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होगा, वो फिट एंड प्रॉपर है कि नहीं, वो क्वालिफाइड है कि नहीं, उसको बैंकिंग का नॉलेज है कि नहीं, ये आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और ये इस्टेब्लिश करने के बाद रिजर्व बैंक ये कहती है कि ये जो तुम्हारा CCO वाला बंदा रहेगा, ये नोडल ऑफिसर रहेगा फॉर द रेगुलेटरी इंटरेक्शंस एंड ही शुड बी अ पार्ट ऑफ ऑल सच कमिटीज़ where the inspection, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंस्पेक्शन एंड डिस्कशंस रेगुलरली जो रिजर्व बैंक के साथ होते हैं, वो आपको ये CCO को करना पड़ेगा। हालांकि ये सर्कुलर ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें एक्शन बहुत सारी है, दिस इज़ फुल्ली लोडेड विद एक्शन। जैसे कि उनका एक इमेजिनेशन है कि भाई ये एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर करके क्या होने वाला है। समझो आपकी 10 ब्रांचेस हैं, तो वो चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स नीचे तक जाए। उसका मतलब मुझे जो लगता है वो ऐसा है कि आपके हर एक बैंक में, हर एक ब्रांच में एक कंप्लायंस ऑफिसर होगा, और ये कंप्लायंस ऑफिसर क्या करेगा, रिजर्व बैंक ही नहीं तो आपके बैंक के भी जो इंटरनल गाइडलाइंस है उसका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखेगा, वरायंस है आइडेंटिफाई करेगा। क्वार्टरली रिपोर्टिंग होगा अगर आपके पास कंप्लायंस कमेटी नहीं है और सिर्फ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है, तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर CEO और MD इन सबको छोड़ के बोर्ड को उसके साथ बात करनी है कि भाई सब ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसकी अहमियत, उसका इम्पोर्टेंस, उसका औहदा बहुत बड़ा है। देयर आर नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस। अगर आपके बैंक में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है तो वो ये कहते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सेकंड लेयर का बंदा CCO होगा। यानी मान के चलो कि आपके पास CEO है, उसके नीचे GM है, GM के नीचे DGM है, DGM के नीचे AGM है, तो ये कहते हैं कि DGM का सेकंड लेवल का बंदा आपका चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए। लेकिन उसमें उन्होंने बैंक लेवल स्पेसिफिक रिलैक्सेशन दिया है, टायर 3 वालों को भी उन्होंने स्पेसिफिक रिलैक्सेशन उसमें दिया है। तो ये जो कंप्लायंस फेलियर जो आपके होते हैं, ये कंप्लायंस फेलियर के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा है। और एक चीज़, नया शब्द हम सबको सीखने को मिलने वाला है, वो ये है कि आपको ये जो कंप्लायंस ऑफिसर होगा उसको आप ड्यूअल हैटिंग नहीं करोगे। ये ड्यूअल हैटिंग का मतलब, अगर वो पैराग्राफ पढ़ते हो तो आपको ये समझ में आए, उसको 2 टोपी नहीं देना है। यानी कैसे कि आपका चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है एक बंदा, तो वो क्रेडिट नहीं देखेगा, तो क्रेडिट भी देखेगा और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर भी होगा, ऐसा नहीं चलेगा। सेकेंडली, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर शुड बी इंडिपेंडेंट, यानी उसको बिजनेस रिलेशन, सैंक्शनिंग, परचेस के बारे में उसको इन्वॉल्व नहीं करना है आपको। ही शुड बी एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू कॉमेंट on whatever that is happening in the bank if it is not within the rules and norms. He should not be involved in any kind of sanctions and purchases and procurements. उसके नीचे स्टाफ तो होंगे, स्टाफ को ट्रेनिंग देना, ये सब जो बातें हैं वो तो होती रहेंगी। वो ये कहते हैं कि बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सीजन बंदा चाहिए, सीनियर एग्जीक्यूटिव चाहिए, और ये कंप्लायंस डिपार्टमेंट का भी आपको ऑडिट करना ज़रूरी है। सुपरवाइजरी फोकस के बारे में वो ये कहते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लायंस, जो करंट प्रिवेलिंग आपके पास नॉर्म्स होंगे, विल बिकम अ पार्ट ऑफ द सुपरवाइजरी रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट। इसका मतलब ये है कि आप जो भी इस बारे में करोगे उसको ड्यूरिंग इंस्पेक्शन इवेल्युएट किया जाएगा। तो ये कंप्लायंस रिस्क आप किस तरह से करते हो उसके ऊपर इवेल्युएट करेगा रिजर्व बैंक का इंस्पेक्टर, और आपको बताएगा कि ये ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। CCO के अपॉइंटमेंट टेन्योर के बारे में भी उन्होंने कहा है कि आप अगर CCO को अपॉइंट करते हो तो उसका डिटेल ब्यौरा आपको देना पड़ेगा। उसका नॉर्मल टेन्योर 3 साल का है, लेकिन बैंक अगर चाहती है तो उसको 1 साल बढ़ा सकती है, और उसको ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हैं। डिफाइंड प्रोसीजर चाहिए। CCO जो होगा वो सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा,
उसके पास स्किल सेट होना बहुत ज़रूरी है। ही विल हैव कंप्लीट फ्रीडम। ना तो तुम्हारे बोर्ड का या ना तो तुम्हारे सीनियर मैनेजमेंट का कोई बंदा उसको बोल सकता है अरे यार ये मत करो या वो करो, ये नहीं बोल सकता है। उसको इंडिपेंडेंट व्यू फॉर्म करना चाहिए। अगर लगता है कि अपनी बैंक ठीक से काम नहीं कर रही है तो ही कैन रिपोर्ट डायरेक्टली टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। आपके पास अगर बंदा नहीं है तो आप उसको कंप्लायंस ऑफिसर को हायर भी कर सकते हैं। आपको जैसे मैंने पहले कहा था कि आपके यहाँ जब वो सीसीओ आप अपॉइंट करोगे तो आपको प्रायर इंटीमेशन रिजर्व बैंक को देना है। वो यही कहते हैं कि आपका जो एमडी और सीईओ होगा वो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया सीसीओ कंप्लाई करता है कि नहीं, ये इसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। रिपोर्टिंग लाइन की मैंने आपको बताया कि वो डायरेक्टली एमडी और सीईओ को रिपोर्ट कर सकता है, सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर सकता है। अगर ऐसी कोई कमेटी नहीं है तो बोर्ड उससे 3 महीने में एक बार सीधे बात कर सकती है और सीसीओ का परफॉर्मेंस भी आका जाएगा। ये क्यों आया है? मैंने कंप्लायंस पॉलिसी के बारे में कुछ बात नहीं कही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंप्लायंस पॉलिसी के बारे में थोड़ा इवॉल्व होना ज़रूरी है फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन कंप्लायंस पॉलिसी आपको ये देखना है कि समझो आपके बैंक में 100 बंदे काम करते हैं, तो उन 100 बंदों को आपको सिंपल चीज़ बतानी है कि भाई आरबीआई के गाइडलाइंस वायलेट मत करो, कोई भी स्टेट रेगुलेशन या ये रेगुलेशन होगा उसको वायलेट मत करो। अगर उसको रिजर्व बैंक का जो कोई सर्कुलर आता है उसके इंटरप्रिटेशन में आपको तकलीफ है, समझ में नहीं आता है, तो सीसीओ को पूछो। अगर सीसीओ को नहीं आता है तो वो क्या करेगा? ही कैन ऑल्सो सीक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बात अलग है कि रिजर्व बैंक से उसका जवाब कब आएगा इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सीसीओ इज़ नाउ becoming a thing of today. And you will find that the September 19 guidelines which we have received are virtually a copy paste of 2015 Chief Compliance Officer guidelines for the commercial banks. ये क्यों आया है? क्योंकि हम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। कितने सारे बैंकों को पेनल्टी हो चुकी है, बताने के बाद ये मत करो, बताने के बाद वही कर रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक ने अपना काम थोड़ा आसान कर दिया है कि वो कंप्लायंस ऑफिसर को हर 15 दिन में पूछा क्या चल रहा है तो उनको पता चलने वाला है। तो सीसीओ इज़ जिसको हम कहते हैं ना कि सीसीटीवी फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज फार एज योर बैंक इज कंसर्न। सो योर सीसीटीवी, रिजर्व बैंक सीसीटीवी विल बी योर सीसीओ। वो ये देखना चाहेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसको पूछ के, उसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करके। आप कुछ भी बनाओ, कोई भी नया प्रोडक्ट लाओ, कुछ भी लाओ, सीसीओ विल हैव टू एंश्योर दैट इट डजंट वायलेट एनी ऑफ द रेगुलेटरी गाइडलाइंस। सो उसका क्लियरेंस, उसका इन्वॉल्वमेंट इन द एंटायर प्रोसेस इज़ अ मस्ट। सीसीओ आपको क्या करने वाला है ये भी एक बात मैं आपको बताता हूँ। सीसीओ आपको बचाएगा। किस चीज़ से बचाने वाला है सीसीओ आपको? रेगुलेटरी वायलेशन या गलत ढंग से चीज़ें करना। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैव अ टिपिकल हैबिट कि वो बोर्ड सीसीओ को पकड़ के बोलती है कि ये करो। वो रिजर्व बैंक के कानून के खिलाफ है, फिर भी सीईओ प्रेशर में आता है क्योंकि उसको तो उसकी नौकरी करनी है। इसमें सीसीओ बीच में आ जाएगा। सीसीओ विल गिव अ शेल, सीसीओ विल गिव कवर टू सीईओ। कवर क्या करेगा? वो बताएगा कि सर ये गलत हो रहा है, ये गलत, ये ठीक नहीं है। फिर भी अगर बोर्ड नहीं मानता है, फिर भी अगर गलत चीज़ें करना चाहता है, फिर भी अगर रिजर्व बैंक ने जो डूज एंड डोंट्स के गाइडलाइंस दिए गए हैं रिजर्व बैंक द्वारा डायरेक्टर्स के लिए, वो फॉलो नहीं हो रहा है, he can report, CCO can report straight away to the Reserve Bank of India that the instructions of don'ts are not being followed in my bank. Mind you, ये CCO का CCTV वाला नाटक आया है ना, ये अपने जितने भी डायरेक्टर बंदे हैं उनको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। क्यों समझ लेना चाहिए? क्योंकि आप बार बार वही गलतियां दोहराओगे। इंडिविजुअल डायरेक्टर पकड़ के चलो, बार बार गलतियां दोहराओ। देर आर फ्रीक्वेंट रिपोर्ट्स फ्रॉम द सीसीओ टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि ये बंदा कानून के खिलाफ काम करने की कोशिश कर रहा है। डू यू नो दैट BR Act हैज अ प्रोविजन टू रिमूव अ सिंगल डायरेक्टर
इन अ बैंक, ऑफ कोर्स शो कॉज देंगे, इंक्वायरी करेंगे, फिर रिमूव करेंगे. दे कैन रिमूव. BR Act has a power, and now the implementation of BR Act via CCO will be the key thing. हम जो सोच रहे हो हमें कौन पूछने वाला, साल भर के बाद आएगा, ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा. Now if you do something which is beyond BR Act, it will be reported. एक डायरेक्टर बंदा कुछ करता है, it will be reported to the board, and if board doesn't take action, it will be the job of CCO to report to the Reserve Bank of India, because there will be direct interaction day to day basis. तो जो बैंक्स अच्छे काम करते हैं उनके पास आज भी कंप्लायंस ऑफिसर है. उनको कहा नहीं जाता कि ये कंप्लायंस ऑफिसर है. वी डोंट कॉल देम कंप्लायंस ऑफिसर, बट दे आर डूइंग कंप्लायंस. इसका एग्जाम्पल क्या है? 1400 बैंक है देश में लगभग, और पिछले 2 साल में लगभग 200 बैंकों को पेनल्टी हुई है. इसका मतलब क्या है? दूसरा मतलब सिंपल, 1200 बैंक अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पास सीसीओ नहीं है, लेकिन उनके पास ऐसे बंदे हैं जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस करते हैं. कंप्लायंस पॉलिसी क्या कवर करनी चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो करूंगा. बिकॉज दिस सर्कुलर हैज जस्ट कम 2 days ago. आई जस्ट वांटेड टू वार्न यू एज टू the need to take this particular very seriously and ensure that you don't get caught on the wrong foot. Please enjoy the video which I have been doing for you. Like and share it. Thank you for watching my videos. Thank you so much.